So let me share the PPT. Okay, so are you able to see the PPT and hear my voice both clearly? Please reply. It will take 2 3 seconds. Yes, is it visible now? Okay. Okay. So we have discussed the energy band diagrams of PN junction diode. If you do remember last time, I have told you how to draw the energy band diagrams, right? The conduction band, valence band. There is a Z shape. How the shape comes, you have to align EFP and EFN. Then near EFP you will draw valence band. Away from EFP you will draw conduction band. Here you will draw conduction band near the EFN. So there is a shift in the conduction band. Do you remember everyone how to draw the energy band diagram of PN junction diode? याद है सबको? We have drawn it last time. Yes. Then we have also discussed little bit of how or what will happen to the depletion regions if we forward or reverse bias the diode. So during forward bias, what happens? The depletion region gets narrower. The depletion region is crushed by the two sides of the charge carriers of their motion towards the junction. And the indirectly on the energy band diagram, I can see the effect as you can see in this GIF. The height of these sides n sides conduction band valence band is reduced. This height get increased, this height difference get reduced. Okay, you can see when we forward bias, this arrow shows that these bands are getting up. So what will happen now, the two conduction bands will fall in line, and hence the conduction of electrons in the conduction band and so as the holes in the valence band will begin. Okay, if I want to show you something like this, how to draw the energy band diagram for forward bias PN junction diode. If the question comes in examination, then how you are going to draw this? So last time we have drawn EFP and EFN in one line. This time we will draw EFP here and EFN little on higher side. Now here will be valence band, so as this will be valence band. Then the conduction band and the conduction band over here. So almost both the bands are raised. Okay, so this depletion layer, if I want to draw the depletion layer, so this will be reduced, very much reduced as compared to previous. Okay, so this height is reduced and hence there will be a flow of charges. Okay, so such kind of diagram will be for forward bias. This is, if I want to name it, so this is now your EFP and this is EFN. EFN has gone up. This is your conduction band of N side. This is conduction band of P side. Almost both are aligned. This is valence band of P side, valence band of N side. Okay. And now what will happen? The electrons over here, इस side में जो भी electrons है, they will
have now this height reduced, so they can pass this barrier easily, and hence these electrons will start conducting over here. Okay, so depletion region, if I want to draw, so this depletion region is narrower. ये इतना नैरो डिप्लीशन रीजन यहाँ पे रह जाएगा जो कि पहले काफ़ी बड़ा था. ओके, और अब हाइट ऑफ अगर हमको बात करनी है डिप्लीशन लेयर की, तो यहाँ पे हमने ई वी नॉट लिखा था, याद है आप लोगों को? डू यू रिमेंबर दिस? कंडक्शन बैंड के जो दो कंडक्शन बैंड है उन दोनों के जो हाइट्स होते हैं उसका डिफरेंस ई वी नॉट था. अभी वो हो जाएगा ई वी नॉट, E in bracket V naught minus V, where this V is the forward bias battery voltage. Okay, like if I draw the simple PN junction diode diagram, ये है आपका PN junction diode, ये बीच में है आपका डिप्लीशन लेयर. इसको मैंने अगर किया यहाँ से कनेक्शन फॉर बैटरी, so if this is P side, this is N side, then P is connected to positive of battery and N is connected to negative of battery, that is forward biasing. Okay, so this battery potential is nothing but V. So this V will help to raise the conduction band and valence band of N side and to get match with the height of P side, and this will help in the conduction of electrons from N side to P side, and so as the case of holes from P side to N side. Okay, मैंने पहले ही दिन बताया था holes are not any entity, holes are nothing but the vacancy of electrons. So if electrons are getting shifted from this to this, hole is getting shifted from here to here. So in that way the holes will move. So this is the case of forward bias where the depletion region is crushed, the height of the depletion region is we can say decreased, and hence the two conduction bands and valence bands will have the matching heights, so there will not be any potential hurdle and the electrons and holes will cross the junction easily and they will start conducting. Got it everyone, what happens in the forward bias of energy band diagram? So the same is shown in this animation. So if I run the animation, so the depletion region is reduced, height is increased, so electrons started crossing. Now you can see what is happening with these electrons. The electrons are crossing the junction and there are chances that electrons may jump down inside the holes, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी साइड में आ गए और पी साइड में बहुत सारे होल्स है. होल इज नथिंग बट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट समथिंग विच कैन satisfy a hole. So both of these entities are exactly having opposite nature of each other, but they are having very attraction towards each other. They have very affinity towards each other, and so hence most of the chances are during forward bias, the electrons will get recombined with the holes. ओके, ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में जंप बैक from conduction band to valence band and they may get fit inside the hole. This jump will always lead to some emission because it's a jump from higher energy to low energy, and this emission is nothing but kind of energy emission. When this emission is in the wavelength range of visible light, then we can see the light which happens in LED. When this is not in the visible range but it is in the form of some heat radiation, then the energy is emitted is in the form of heat, like normal PN junction diode. Okay, so this recombination process of electrons and holes after they cross over the junction
is possible because of the forward bias, because electrons and holes have affinity towards each other, and these recombination may lead to some emission of energy. This energy may be some photons in case of light emitting diodes, and this energy may be in the form of some heat. Okay, non-radiative transitions in case of some p-n junction diodes. Okay, so लाइट emitting diodes are specially doped diodes जिसमें ये एनर्जी हाइट को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि ये एमिशन लाइट बाहर फेंके. ओके, उसका जो एमिशन का वेवलेंथ है आप सबको पता होगा, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा. सो इफ आई एडजस्ट ई आई कैन ईजीली से अबाउट लैम्बडा. ओके, मुझे लैम्बडा अगर 4000 से 7000 के बीच में चाहिए तो उस हिसाब से मैं एनर्जी डिफरेंस एडजस्ट कर सकती हूँ बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर डोपिंग मटेरियल जिसका एनर्जी डिफरेंस उतना है. So in that way I can have the light emission out of this recombination process. नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड में ये एनर्जी डिफरेंस बहुत छोटा होता है, तो वहाँ पे वो विजिबल रेंज को टच नहीं कर पाता, वो एज अ नॉर्मल हीट रेडिएशन बाहर हो जाता है. ओके, so LEDs are specially doped p-n junction diode, like some materials like arsenic, galvanium, etc. They are gallium, sorry, they are doped with the uh, no, silicon germanium material so that the energy difference is properly maintained to get visible radiations out. The wavelength should be in the visible range, okay, of the emitted photons due to recombination of electrons and holes. Okay, so this is in forward bias. In reverse bias you all remember, reverse bias में फिर क्या होगा, उल्टा होगा. EFP और EFN का हाइट अभी उल्टे साइड से चेंज होगा. EFP ऊपर आ जाएगा, EFN कम आ जाएगा, क्योंकि बैटरी का रिवर्स पोटेंशियल और इस डिप्लीशन रीजन को बड़ा कर देगा, इसके हाइट को बड़ा कर देगा. So what will happen? The electron will not be able to cross from conduction band of N to conduction band of P, and so will be the case of holes from valence band of P to valence band of N. So there will be no movement of majority charges. हाँ, ऐसे सिचुएशन में थोड़े बहुत माइनॉरिटी चार्जेस मूव करेंगे क्योंकि उनके लिए ये करेक्ट बायसिंग बैठेगा, पर वो इतने कम है संख्या में दैट दे मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ प्रॉपर करंट. So current conduction will be in microamperes, that will not even be detected by the normal milliammeters, etc. And hence we may say that the diode has stopped conducting. So same is the case with the LED. Light emitting diode भी reverse bias में लगाने से conduct नहीं करते, so they will not glow. Okay, so because here the energy height is again become more increased. Okay, the energy height energy difference is increased because of the reverse potential. तो पिछले हमने जो लिखा था ना कंडक्शन बैंड एन साइड का और कंडक्शन बैंड पी साइड का, उसका जो हाइट है ई वी नॉट, अभी वो हो जाएगा ई वी नॉट प्लस वी. तो बैटरी जितना और पोटेंशियल से उसको उल्टा करेंगी तो उतना उसका हाइट का डिफरेंस और बढ़ेगा, और इसलिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे नहीं क्रॉस कर पाएंगे. सो हैव यू अंडरस्टूड द एनर्जी बैंड डायग्राम्स of p-n junction diode in forward and reverse bias? Will you be able to draw them and explain a little bit about the motion of charges? कर सकेंगे सब लोग? Yes, I want the responses from everyone, please. Are you even listening? Yes. So now if I move further in this unit, so now the important topic which we are going to start is optoelectronic devices. Okay, this is the second half of your semiconductor chapter. Almost in 2 lectures we are going to finish this one. Okay, and all this semiconductor unit and the laser will be there in your CA2. Okay, which is going to be maybe in the first week of July, I think 9th or 10th date है ना something. Okay, so optoelectronic devices. Optoelectronic, opto means light, electronic means devices which work on the principle of motion of electrons. So semiconducting devices basically. So ऐसे devices जिसमें इलेक्ट्रॉन मोशन कंस्टिट्यूट करता है करंट या अलग अलग चीज़ें लाइक डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह, वो डिवाइसेस जो लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, या तो लाइट लेते हैं या लाइट देते हैं. These devices are basically called as optoelectronic devices. The devices which deal with the functioning or motion of electrons which is affected by the incidence of light or emission of light. Okay, so optoelectronic devices are basically classified into 3 categories: sensors, couplers or isolators, and emitters.
Now sensors are something which will sense the light and work accordingly. So like photo dependent diode or photodiode. Okay. So the photodiode will receive the light radiations and it will change its function by receiving the light radiation. Opposite to sensors, there are emitters. Emitters are going to emit the light, light like light emitting diode, then IR diode or lasers. These devices will emit the light. सो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक में दोनों डिवाइसेस आ गए, जो लाइट लेते हैं या जो लाइट देते हैं। ठीक है। तो फोटो डायोड और एलईडी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फोटो डायोड वो डायोड होता है जिसके ऊपर अगर फोटो डालते हो, फोटो मतलब लाइट, तो वो उसका फंक्शनिंग कम ज़्यादा करेगा, मतलब उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो लाइट के ऊपर या तो पॉजिटिव कोएफिशिएंट से डिपेंड करेगा या नेगेटिव कोएफिशिएंट से डिपेंड करेगा। मतलब कुछ फोटो डायोड करंट बढ़ा भी सकते हैं लाइट गिरने पे, कुछ कम भी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोएफिशिएंट, नेगेटिव कोएफिशिएंट। ठीक है, मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, वन एंड द सेम थिंग। और सेकेंड टाइप होता है एमिटर्स। एमिटर्स आर द ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच आर गोइंग टू एमिट द लाइट, ओके, व्हेन दे आर अप्लाइड विद सम पोटेंशियल्स और समथिंग। ओके। और अब बीच के जो डिवाइसेस है कपलर्स या आइसोलेटर्स, दीज डिवाइसेस आर बेसिकली coupling these two kinds of devices together. They will have the sensors in which there is a emitter and a receiver. So receiver is a kind of a sensor. So just like your remote control and the television set, remote control से आप जो ऑपरेट करते हो वो emit कर रहा है कुछ IR रेडिएशन में, जो रेडिएशन आपको दिखाई नहीं दे रहे। और टेलीविज़न टेलीविज़न के अंदर सेंसर बैठा हुआ है, वो वाले आयर रेडिएशंस को देख पा रहा है, ले पा रहा है और उसके हिसाब से अपना फंक्शनिंग चेंज कर रहा है। सो दीज आर कपलर्स और आइसोलेटर्स। ओके। नाउ देर आर मेनी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज थिंग्स, लाइक सेंसर्स में फोटो कंडक्टिव होते हैं, फोटोवोल्टाइक मतलब सोलर सेल जैसे होते हैं, देन फोटो एमएसयू काइंड ऑफ डिवाइसेस होते हैं। emitters में एलईडी, आईआर, लेजर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। then there are different different types of sensors if we go in details, but we are not going to study all of them. We are going to study few optoelectronic devices in this unit, और उसमें से पहला है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ओके। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यू कैन नेम एनी ऑफ दीज। इसमें से कोई भी ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का तुम नाम ले सकते हो, जैसे फोटो डायोड हो गया, फोटोवोल्टाइक हो गया, एलईडी हो गया, लेज़र हो गया देन देर आर मेनी। ओके। सो इसमें से कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे पहला है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इट्स अ डायोड बेसिकली, बट इट इज़ अ typically doped p-n junction diode, which is doped in such a way that it will emit light due to recombination of electron and holes in the forward bias. Okay. अब LED are classified into 5 different categories. लाइक ट्रेडिशनल एलईडी, सबसे पहले जो एलईडी खोजे गए वो ऐसे दिखते थे, छोटे छोटे से, आप लोगों ने देखा भी होगा लैब्स में वगैरह। ये ब्रेड बोर्ड पे फिक्स किए जाते थे, फिर उसका छोटा सा सर्किट बनाया जाता और एक 9 वोल्ट का वगैरह 5 वोल्ट का बैटरी लगा के उनको ग्लो किया जाता। सो दीज आर ट्रेडिशनल एलईडी। nowadays also they are used for practical purposes or even to know whether the circuit is on or off. तो कभी कभार आपने स्विच बोर्ड्स में देखा होगा छोटा सा एलईडी लगा रहता है जो बताता है कि पावर ऑन है या ऑफ है। ओके। सो बेसिकली सच काइंड ऑफ एलईडीज आर सिग्नलिंग एलईडीज वगैरह। ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर भी एलईडी पैनल बनाया होता है। ओके। अब second kind of LED is multicolor LED. Multicolor LED is the one which will not emit only one color, but it will emit more than one color. Okay? एक ही LED मल्टीपल कलर एमिट कर सकता है। सो ये एलईडी बनाए जाते हैं ज़्यादा डोपिंग से, जिसमें ज़्यादा एनर्जी लेवल्स डाले जाते हैं, तो वो एक ही जो एटम है वो हायर एनर्जी से जंप करते करते अलग अलग लेवल्स में जंप करते करते नीचे आएगा, तो उतने वेवलेंस बाहर वो फेंकते जाएगा। सो दैट इज़ मल्टी कलर एलईडी। Okay, so you can change the wavelength of the color emitted, so that's the concept of multicolor LED. Then the third, which we are going to study in more detail, is organic LED, OLEDs. OLEDs are nowadays more popular. Okay. Now the difference is that OLEDs are not made up of semiconducting material like silicon, germanium वगैरह. OLEDs are made up of some fibers or some polymers, some materials of carbon, hydrogen, oxygen chains, जिसको organic materials कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑर्गेनिक थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन combinations. So these OLEDs are made up of those polymers. Okay, and that's why they have the properties of some organic things like flexibility, like transparency. Okay, जैसे polymers में होती है। ठीक है, so we are going to study these OLEDs in details.
देन होते हैं मिनिएचर एलईडी। अब मिनिएचर एलईडी क्या होता है? Miniature means the small and small and small. You can make the LED of very small size. आप लोगों ने देखा होगा there are LED strips available in the market nowadays. You can even roll over that strip onto the balloon, or you can over directly paste that strip on the decoration site. ओके, यू डोंट हैव टू माउंट द वायर एंड द बल्ब्स एक्सेट्रा। वो डायरेक्टली स्ट्रिप आप पेस्ट कर सकते हो जहाँ पे छोटे छोटे येलो कलर के स्पॉट्स लगाए जाते हैं और वो येलो स्पॉट डायरेक्टली ग्लो करते हैं विदाउट इवन दे नीड सम ग्लास इवैक्यूएशन एक्सेट्रा। उनको कुछ नहीं लगता, कवर नहीं लगता, उनको बल्ब नहीं लगता, वो सिर्फ डायरेक्टली स्पॉट है जो luminescent मटेरियल के हैं। when they are given with two electrodes and some potential they will start glowing. So miniature LEDs are basically for such things जहाँ पे छोटे से छोटा डॉट आप मार सकते हो और वो डॉट ग्लो करेगा। ओके, सो दिस इज़ मिनिएचर एलईडी कंसेप्ट, जिसमें अलग अलग ऐसे पी एन जंक्शन वगैरह नहीं दिखेगा, डायरेक्टली ल्यूमिनेसेंट मटेरियल का छोटा सा डॉट मारा जाता है जो कि ग्लो करेगा ऑन सप्लाइंग सम वोल्टेज। And last is high power LED. High power LEDs are basically to illuminate the rooms. आप लोगों को पता होगा nowadays all the in-house decorations, in-house lighting are made up of LEDs. अभी कोई भी अपने घर में ट्यूबलाइट या सिंपल बल्ब वगैरह नहीं लगाते, उनके सबके रूफटॉप में पीओपी किया जाता है और सब में इन रूफ लाइटिंग लगाई जाती है जो कि बेसिकली एलईडीज़ होती है और वो एलईडीज़ वाइट एलईडीज़ होती है। ओके, द थिंग आई वांट टू टेल यू इज़ एलईडीज़ जब खोजे गए, एलईडी का इन्वेंशन काफ़ी पहले हुआ, ठीक है, पर अभी रिसेंट में खोजा गया वाइट एलईडी। एलईडी जब खोजे गए तब वो बेसिकली रेड कलर ग्रीन कलर के वगैरह थे बिकॉज दैट वाज ईजीएस्ट वे टू गेट द वेवलेंथ। ओके, सबसे डिफिकल्ट वेवलेंथ होता है वाइट वेवलेंथ लाना बिकॉज वाइट इज़ नॉट अ कलर, white is a mixture of all colors, so it's very difficult to create a white light because you have to mix all the colors together. You have to have that much energy band which will give you the emission of all the colors and which will eventually become a white. So this high power LED is recent invention in some 80s or 90s, and from there we are getting this white LED, so which are also very less power consuming, which are long lasting, which are having many different properties. तो जो होम इल्यूमिनेशन जो होता है आर्किटेक्चरल एलईडीज जो लगाए जाते हैं, दीज आर दीज हाई पावर एलईडीज। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एलईडीज। इफ एनीवन आस्क यू, यू मे मेंशन दिस। नाउ वी विल सी द वर्किंग ऑफ एलईडी। ठीक है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम से, पीएन जंक्शन वाली ब्लॉक डायग्राम से और ये एनिमेशन से आई विल टेल यू हाउ द एलईडी वर्क्स। इट्स वेरी सिंपल। When the PN junction diode, LED diode, okay, this is the symbol, a triangle and a line. Triangle indicates P, line indicates N, and having two arrows out. These arrow out indicates it's emitting light. Okay, so this is the complete symbol of light emitting diode. When it is forward bias, so this P side is connected to the positive of battery and this N is connected to negative of battery. So what will happen? This positivity will repel these holes and it will make it move further, and this negativity will have a repulsion on this electron and it will make it move further. So holes and electron will start moving, crossing their junction. So depletion region will get narrower and narrower, and this height will get increased, and hence this two conduction bands will form in a line with each other, and the electron will easily cross now. Now what will happen after they cross? There are holes and there are electrons. So electrons are something which are readily absorbed by the holes. So these electrons may get absorbed in the hole, and hence they are jumping from high energy to low energy, so they will emit the light. And in this way during each recombination of electron hole there is a light emitted. तो ये देख सकते हो आप लोग, ये देखो इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन हो गया, लाइट बाहर आया, ये इलेक्ट्रॉन ने क्रॉस किया, होल ने इधर से आया और यहाँ पे कंबाइन हो गए, लाइट बाहर आया। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं, होल्स वैलेंस बैंड में होते हैं। जब आप बोल रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, कंबाइन होंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होल्स है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। जस्ट इमेजिन द सिंपल सिचुएशन दैट एक साइड में बहुत सारे गड्ढे हैं और इस साइड से बहुत सारे लोग भागते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे लोग भाग रहे हैं और उनके बीच में बहुत सारे गड्ढे आ रहे हैं, तो कुछ चांसेस है कि कुछ ना कुछ लोग उन गड्ढों में गिर जाएंगे। सो सेम विल हैपन विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं बहुत सारी संख्या में और उसके जहाँ से वो क्रॉस कर रहे हैं उनके पाथ में बहुत सारे होल्स है, और होल्स कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली फिट हो सकते हैं। सो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल गो इनसाइड द होल, दे विल गेट जम्प फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, और क्योंकि वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जंप कर रहे हैं, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू थ्रो दिस एनर्जी आउट।
हाई से लो में जंप तभी होता है जब वो एक्स्ट्रा का एनर्जी बाहर फेंकेगा। सो ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट बाहर फेंकी जाती है। सो इन दिस वे एलईडी वर्क्स। हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आया एलईडी कैसे काम करता है? और ये सब कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे, होल्स क्रॉस करेंगे, और वो क्रॉस कब करेंगे? जब आप उसको फॉरवर्ड बायस दोगे। रिवर्स बायस में ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस में इलेक्ट्रॉन्स और होल अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, बैटरी की तरफ चले जाएंगे, तो वो क्रॉस नहीं करेंगे जंक्शन, तो फिर वो रिकम्बाइंड नहीं होंगे। रिकम्बाइंड नहीं होंगे तो वो लाइट एमिट नहीं करेंगे। गॉट इट एवरीवन? ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. So now the advantage and disadvantages of LEDs. Okay, very popular technology recently invented, maybe last in 20-30 years, and easily get popularized because of its many different advantages. Like a common advantage of light emitting diode, it is highly energy efficient. Now just excuse me for a second. माझं पण. Okay, so LED light advantages. Now, advantage of LED is energy efficient. Okay, it can produce more light per watt, then long lifetime. Okay, LED का लाइफ टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 60,000 आवर्स और मोर. नॉर्मल इनकैंडेंसेंट बल्ब इतने ज़्यादा लाइफ टाइम तक नहीं रहते, वो जल्दी फ्यूज़ होने के चांसेस होते हैं. Now rugged means they are vibrational free, they cannot get easily broken up. ठीक है, अगर एलईडी लाइट गिर भी जाता है तो भी वो फूटता वगैरह नहीं है. ठीक है, नॉर्मल अगर बल्ब आपके हाथ से गिर जाए तो उसका ऊपर का जो ग्लास कवर है वो फूट सकता है, फिलामेंट टूट सकता है, बट एलईडीज आर मोर रफ एंड टफ. Then no warm up period required. Warm up period मतलब if you have tube light, if you have seen the earlier tube light, the tube lights trigger used to blow first and then the tube light used to glow. So it requires some blinking to glow before it gets on. So same thing is not applicable to LED tube lights. Nowadays you must see the LED tube lights, जैसे ही you plug on the things, the tube light gets burned. Okay, then the next is not affected by the temperature. If you have the temperature changes like climate changes, rainy season, moisture, or high temperature of summer, there is no effect of that on the LEDs. Okay, the LEDs work efficiently even in all sort of temperatures. Then directionality, LED lights are also very directional. They are also used in optical fiber communications. Okay, then environmental friendly, they do not emit the toxic gases like a mercury lamp etc. mercury lamp में वगैरह toxic gases बाहर निकलती है, toxins बाहर निकलते हैं, LEDs में वैसे नहीं होता. They are not toxic at all. Then controllable, you can control the brightness of the LED lamp also. You can easily change its color. ठीक है, विदाउट इवन अप्लाइंग द फिल्टर्स बिना अप्लाई किए भी आप उसका कलर चेंज कर सकते हो. बेसिकली उनके जो कलर्स है वो आप उस तरह से चेंज कर सकते हो. देन नेक्स्ट, इट कैन सस्टेन ओवर द फ्रिक्वेंट ऑन ऑफ साइकिल. यस, जैसे ऑन ऑफ करोगे आप नॉर्मल बल्ब को, तो वो जल्दी से ख़राब होने के चांसेस होते हैं, फ्यूज़ होने के चांसेस होते हैं, फिलामेंट डैमेज होने के चांसेस होते हैं. ट्यूबलाइट को भी अगर आप फ्रिक्वेंट ऑन ऑफ करोगे तो वो ख़राब हो सकता है, पर इसमें नहीं होता. एलईडीज़ में कितना भी आप फ्रिक्वेंट उसको ऑन ऑफ करो, द एलईडी विल वर्क प्रॉपरली. Okay, so these are the advantages of LED. Then there are applications depending upon these advantages. Now what are the common applications? The application is display lighting. Display lighting means many of the front panels are made up of LED lamps. Okay, like we have the voltmeter, we have the digital multimeter. Okay, or you can have digital watch. So all these digital things are having the LED, which is called as 7 segment LED, which is used to have the display. Okay, then there are display cases, museum, shop lighting, illumination. You can see the decorative lightings etc. Okay, LED series वगैरह जहाँ पे decoration purpose के लिए use किए जाते हैं. Then underwater lighting, the very
remarkable application of LED came in picture when it come in underwater conditions, because normal tube lights or bulbs were not useful in underwater lighting because they were running on AC. Okay, and in underwater scenario they used to get short up, but LEDs can work on DC. So using simple battery techniques, you can have the close pack underwater bulb LED. Okay, then the outside lighting like street lamps, etc., or the signals, you can also have the LEDs. Signal lighting, sign lightings, the strips, etc., they are made up of LED. They can run on very low power, which can be easily obtained from sunlight. Okay, then low level lighting. Low level lighting means they are cool to touch, like simple toys. The kids have the toys, or the balloons are mounted with the LED strips, etc. So they are harmless to kids, so they can be even fit inside the toys, and hence they are called low level lighting. Then architectural detail lighting means the rooftop, as I told you. Nowadays all the houses are having POPs, which are mounted with the built-in LEDs. So they are consuming less power, they are having very bright illumination, etc., and they are also looking good. The next is the uh, light places where you are not able to use the conventional sources, you can use the LEDs over there. So these are the applications of light emitting diode. Now let us go to the next slide. And now the next special light emitting diode which we are going to see is OLED, that is organic light emitting diode. Now what is organic? I told you organic is something, the material which is made up of carbon, hydrogen, oxygen compounds. Okay, that is called organic compound. So these LEDs are not made up of semiconductor devices like silicon, germanium, but they are made up of organic devices like some polymers or fibers or some monomers, etc. Okay, now how is this the construction of OLED? इसका working पूरा LED जैसा है. There is a combination of positive and negative charge, and there is liberation of energy, and this energy is liberated in the form of light. Okay, so how it is constructed? So there is a glass like a structure जिसके अंदर ये सब layers होते हैं. So one is called substrate. Substrate is a layer on which the different layers are mounted. तो ये हो गया आपका base. Then there is a seal under cap on the top in order to prevent it from some climatic conditions. It's kind of a shield. उसके बीच में लेयर्स होती है, एक होता है एनोड. एनोड इज अ पॉजिटिव लेयर. एक होता है कैथोड. कैथोड इज अ नेगेटिव लेयर. Negative layer is going to emit the electrons, like positive layer is going to have the holes, etc. And then the emissive and conductive layer. Emissive layer, the layer from which the electrons are emitted. Conductive layer, the layer in which conductive layer from which the positive charges are emitted, and emissive layer is something where these charges will get recombined. So here the image on the right hand side will show you the actual working of OLED. You can see कैथोड जिसमें सपोज नेगेटिव चार्जेस है, एनोड पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों यहाँ से यहाँ मूव हो रहे हैं और एमिसिव लेयर में वो कंबाइन होंगे और वहाँ से एमिट करेंगे लाइट. तो बेसिकली ये लेयर से लाइट बाहर निकलता है. कंसेप्ट पूरा एलईडी जैसा है, इसलिए इसको भी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड कहा गया, ओएलईडी. हाउएवर दीज आर नॉट सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, बट दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंपाउंड्स. ओके, अब OLED की एप्लीकेशन कहाँ है? So there are wide applications of OLEDs nowadays only. देखिए, this is very recent technology. So you can see the Audi car having the front and the back panel mounted with complete OLED display. Audi एक ऐसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सबसे पहले ये सब टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करती है. जब LEDs निकाले गए कुछ 70s में, Audi was the first one to have the lighting panels of LEDs. Same is the case with the OLED. Okay. नाउ उसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस हैं, जैसे जो डिस्प्ले, टेलीविजन सेट का जो डिस्प्ले है, यू कैन सी द एडवर्टाइजमेंट कमिंग अप ऑफ सोनी और LG having very transparent and very thin glass displays. These are nothing but OLED display. टेलीविज़न जब सबसे पहले निकाले गए थे तो वो इतने बड़े हुआ करते थे कि उनको एक टेबल लगता था रखने के लिए. उसके बाद फिर आए LCDs, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज. LCD टेक्नोलॉजी थोड़ी पॉपुलर हुई नहीं थी कि तुरंत उसको ओवरकम कर लिया LED टेक्नोलॉजी ने. दैट वाज लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले, विच वाज द थिनर टेलीविजन वी कैन सी ऑफ ऑल टाइम, जो हम इजीली माउंट कर सकते हैं इवन ऑन द वॉल. इवन वी डू नॉट रिक्वायर एनी बेंच फॉर माउंटिंग इट. और नाउ अडेज द
work is being progressed, but still it is yet very costly technology, that the OLED televisions. Okay, you might see some advertisement there. The televisions almost look like a glass sheet, and it can be easily mounted, और इसका खासियत ये है कि it can also be produced as a rolled over display. You can even roll down this display. You can even make it portable. You can carry your television with you somewhere. ओके, जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक ट्रांसपेरेंट wrist बैंड जैसा कुछ टेक्नोलॉजी है, जो आप आसानी से रोल आउट कर सकते हो, कहीं पे कॉम्पैक्टली लेके जा सकते हो. सो दिस इज़ फ्लेक्सिबल डिस्प्ले कंसेप्ट, एंड दिस इज़ नथिंग बट OLED कंसेप्ट. ओके, सो इसको बेंडेबल या फ्लेक्सिबल डिवाइसेस कहा जाता है, विच कैन ऑल्सो हैव द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़. ओके, सो ये सब उनके नाम है जहाँ पे ये एप्लीकेशंस फ़िलहाल यूज़ होते हैं, पर ये टेक्नोलॉजी अभी भी काफ़ी एक्सपेंसिव है. ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी व्हेन इट इज़ न्यू, when we don't know the cheapest material to make it, it keeps on being expensive. Once the scientists develop the cheapest way of developing that product, then it becomes the cheaper and easily available in the market technology. Okay, so then we will quickly see the comparison of OLED and LED. Okay, so OLED, that is organic light emitting diode, LED simple light emitting diode. The comparison is picture quality of OLED is very much better as compared to LED. It is also having very high contrast, then faster response time. Okay, it is more quicker than LED even. It do not require backlighting. Backlighting means the complete display is first required to be illuminated in case of LEDs or LCDs. But here we do not require any back panel. It can directly illuminate. Okay, it is not like made up of simple pixel technology, etc. Then the color space is good. It can be viewed from multiple angles. ठीक है, 180 डिग्री के एंगल में भी देखोगे तो आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा. और सबसे लास्ट पॉइंट है एक्सपेंसिव. ओके, जैसे एलईडी इज चीपली अवेलेबल, ओएलईडीज आर नॉट दैट मच इजीली अवेलेबल, दे आर एक्सपेंसिव. अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज. ओएलईडी इज़ वेरी वेरी थिन, लाइट एंड फ्लेक्सिबल. ओके, इसलिए मैंने कहा रोलिंग स्क्रीन वाला डिस्प्ले तैयार कर सकते हो आप लोग अपना टेलीविजन रोल आउट पूरा बना के एक छोटे से सर्कुलर बॉक्स में डाल के लेके जा सकते हो कहीं पे भी. ठीक है, दूसरा बैकलाइट एलईडीज़ को ओएलईडीज़ को नहीं लगता है जैसे एलईडी या एलसीडी को लगता है. बैकलाइट मतलब पूरा पैनल पहले वाइट लाइट से एलिमिनेट किया जाता है और उसके ऊपर फिर बाकी एलईडी वाले आरजीबीज ग्लो होते हैं. यहाँ पे वैसे नहीं होता. दे डू नॉट रिक्वायर बैकलाइट. इट कैन बी मेड वेरी वेरी लार्ज. जितना भी चाहे उतना बड़ा डिस्प्ले कर सकते हो और जितना चाहे उतना छोटा भी कर सकते हो. देन व्यू एंगल्स पूरे 170 डिग्री तक का व्यू एंगल कवर करता है ये. फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, ब्राइटर, ग्रेट रिजोल्यूशन. सो देर आर मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज. Disadvantages of OLED. OLED seems to be very perfect technology, but it is having many disadvantages like lifetime. OLED का lifetime काफ़ी कम है as compared to the normal LEDs. ठीक है. Then manufacturing, it requires still complex manufacturing techniques, and the cost is also very high. So the devices are also very high. इसलिए ये OLED की लाइट वगैरह ऑडी जैसे कार बेयर कर सकती है. नॉर्मल कार में अभी भी OLED टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हुआ है. देन वाटर रेजिस्टेंस, क्योंकि OLEDs जो होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. सो दे आर इजीली रिएक्टेड इन वाटर बिकॉज वाटर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. सो वाटर रेजिस्टेंस वहाँ पे कम हो जाता है OLEDs का. दूसरा, सनलाइट में उसका डिस्प्ले इफेक्ट होता है. आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ मोबाइल फ़ोन सनलाइट में देखना पॉसिबल नहीं होता. देयर स्क्रीन बिकम्स कम्प्लीटली I can say dominated by the sunlight. So same happens with OLED also. Then limited market availability. तो उसका मार्केट अभी भी इतना नहीं हुआ है because of the cost. Okay, comparatively very high. So these are the disadvantages of OLED. So the questions may come in examination like applications, advantages, disadvantages, properties of LEDs, OLEDs, then working, etc., etc. So have you understood everyone? What are the applications and properties? Now let me stop sharing this one. Come back to the WebEx window.
Yes.